make our dreams tomorrow's reality. A very warm good afternoon to everyone assembled here. Today is going to be the most memorable day of your life. VLSI Club welcome you all to this wonderful event. I, Mansi Verma from EC branch second year with I, Chirag Sharma, second year CSE branch, and the members of VLSI Club extend our heartiest welcome to you all. Today, we will be remembering, acknowledging, and admiring the knowledge of cloud computing and AWS. I hope you all are waiting to know about today's event. Here are some important instructions that you must follow during this webinar. First, everyone please switch off your camera and mic. Second, please maintain the decorum. Third, no nuisance will be tolerated in the chat box. Fourth, those who have any query, please mention it in the chat box. And to make things more exciting, we have organized a quiz in the middle of the session, and the quiz will be attempted in the chat box only. On behalf of entire VLSI Club, we would like to extend our heartiest welcome to our honorable chief guest for today's webinar, Mr. Sagar Jain, sir. So now, without any further delay, I would like to introduce you to our dignified guest of honor, Mr. Sagar Jain. Mr. Sagar Jain is a data analyst at Deloitte. He cracked the AWS Solution Architect certification. Now, I request Mr. Sagar sir to guide and inspire our students in the field of cloud computing. Thank you, VLSI, for the opportunity. So, my name is Sagar Jain. I am AWS Certified Solution Architect and currently employed at Deloitte and at Data Analyst job. Next, please. So, cloud computing. Cloud computing, we can say it is basically an office which consists of several systems, and each system includes different things like processor, hard disk, networking, and much more. So, if I say I can bring those things in just 1% of the cost of the system, like the system is around 1 lakh rupees, and we can provide those facilities online at 2 or 3,000 rupees. So this is possible by cloud computing. We feed the physical things to the virtual things. Next, AWS. AWS is the biggest example of cloud computing. अब हर कंपनी में AWS की एक अपनी जगह है. AWS सारी कंपनीज यूज कर रही हैं आजकल. तो AWS is very popular. AWS provides several services like computing, storage, processing, and much more. Next. So the benefits of AWS. First is flexibility. Flexibility in the sense we can access AWS anywhere and everywhere. We just need an internet connection. Second is cost effectiveness. As I told you, it is cost effective. Third is scalability. Scalability means we can produce as many a system as we want by just one click or one or two clicks. Security. AWS gives us a security features that is IAM and much more. IAM stands for Identity and Access Management. So this is basically the advantages of AWS. Next, please. Types of cloud computing. Yes, there are three types of cloud computing. First is infrastructure as a service, second is platform as a service, and third is software as a service. So when we talk about infrastructure as a service, we talk about AWS. Infrastructure means basically the system which includes processor, storage, RAM, network, LAN cables, and all that we provide with the infrastructure as a service. Next, as I told you, IaaS infrastructure as a service. So it provides the hardware to the software that we can see the hardware things around us. We can produce it virtually with the help of AWS. The AWS is the biggest example of infrastructure as a service. Next. So PaaS, platform as a service. Platform as a service just gives us a platform on which we can code, we can run code, we can deploy our code, we can manage things. Next, software as a service. Software as a service provides other services like it is like we do in the Microsoft Office. Microsoft Office is a software as a service which
gives us various services like editing documents, PDFs, making PowerPoint presentation. Like that, we can say software as a service is also a type of cloud computing, which we do virtually. Next, important AWS services. So let's see which AWS services AWS provide. Next. So the first one is AWS Compute Service. Computer is basically processing. In computers, we do processing, we write code, we run code, and other things. Next is migration. Migration is basically the transferring of data to one place to another. What we use in earlier times, we use pen drives, hard disks to transfer data. But now this is so easy. We can just share our data online, like Google Drives is the biggest example. Next is storage. Storage is yes, also the Google Drive example. We can store a large amount of data online only and share it whenever we need it. And such more services the AWS provides. The main thing, the thing that is engaging day by day is the game development. The companies are working in the cloud technology for the game development. So, as you know, there is a game called BGMI. It takes 8 GB of data, 8 GB of RAM, 6 GB of RAM to run that game. So what if I tell you that we can run the same game on 3 GB or 4 GB phone? So there comes the AWS power. Next. So these are the some applications कह सकते हैं, services कह सकते हैं जो AWS provide करता है. First is EC2. EC2 is basically the processor that runs, or the virtual machine that runs the whole program, the whole machine. So it is the basic level. Elastic Beanstalk is a automated application that we can design and just run. We don't have to take care of the which RAM, which storage, what और क्या क्या चाहिए उसके लिए. Next is EKS. EKS stands for Elastic Container Service for Kubernetes. So we can use the services without any installation. We don't have to install on our system. We can go through all the things online only. AWS Lambda is just for connecting the offline to the online. That is, if we want to run something online and offline too. So we can merge, we can connect while using AWS Lambda. Next, please. Migration, I told you that is the transfer of data. We can use DMS, database migration system. Like example is Oracle to MySQL. We can just shift Oracle database to MySQL database. Second is server migration system. Server is a type of a region where all the machines are built. So we can transfer data from one region to another, suppose America to Australia, like these. Snowball is like a truck where we can load heavy data. Heavy means a large amount of data, and transfer it from AWS to another place, or the place from AWS to AWS only. We can just share a large amount of data. Next, स्टोरेज वी कैन यूज स्टोरेज ऑल्सो. स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या क्या होता था? SSD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी. वो तो बहुत पहले की बात है, लेकिन तो अब हमारे पास सब कुछ डाटा ऑनलाइन स्टोर हो सकता है. हमें अपने फ़ोन की रैम या स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. हम AWS का इस्तेमाल कर सकते हैं. AWS प्रोवाइड करता है हमें अमेजॉन ग्लेशियर के अंदर हम चीप कॉस्ट पे बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बकेट्स, S3 buckets and all that. Second is Amazon Elastic Block Store. So this is a type of RAM which attaches with the EC2 to provide the support for the processing of EC2. So it is not that high amount of data. It is low amount of data which is required for the processing purposes. Next one is AWS Gateway. Gateway is just to connect between the external storage to the internal storage. If we want to
keep some data externally and some data internally. So we can use AWS Storage Gateway. Next. So before quiz, let's do some hands-on. So I think EC2 would be good for the hands-on. Let me share my window. Can you please stop sharing, Vivek? Thank you. So this is basically the console, AWS console. It is from a free account. I don't have the key to my personal account right now. So I am using a free account. So let's start. So first of all, just enter EC2 and you will get the screen EC2 comms will say. So here are many options like running ones, load balancers and all that. So firstly, let's start from the basic. Let's launch an instance. Let's go. Let me name my instance. What should I name? My first instance. Let's go. So we have to decide which machine we are using on. So for now time being, we can do Linux because it is available free. I don't want to spend more money क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मनी लगेगी जिसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो फ्री होगी तो अगर हमें स्टार्टिंग से सीखना है तो फ्री ही यूज़ करना चाहिए तो इसलिए अभी मैं फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ फ्री में मेरे को मिल रहा है Amazon Linux. नेक्स्ट इज इंस्टेंस टाइप इज बेसिकली द रैम टाइप आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए अभी हम हल्का वाला प्रोसेसर लेते हैं जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है नेक्स्ट इज की पेयर लॉगिन इट इज रिक्वायर्ड फॉर जस्ट सिक्योरिटी पर्पसेस so I made this key pair before so I am using it now. Next is network and security. तो नेटवर्क के लिए हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जो कि सब ट्रैफिक को अलाउ करेगा इस टाइम यहाँ पे लिखा है एनीवेयर हम कस्टम भी कर सकते हैं कि मेरे आईपी को ही अलाउ करे इस टाइम हम सबको अलाउ कर रहे हैं कि कोई भी हमारा एक्सेस कर सकता है इंस्टेंस उसके बाद आता है स्टोरेज अभी हम बेसिक वाले ही लेते हैं जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है हम 8 लेंगे और 3 GB पे एडवांस डिटेल्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है सो दिस इज द समरी तो फर्स्टली वी हैव लिनक्स सेकंड इज T2 माइट्रो सिक्योरिटी ग्रुप जो अभी हमने बनाया था नए वाला जिसमें सब कुछ अवेलेबल है और उसके बाद स्टोरेज हमारे पास 8 GB हो गई लेट्स लॉन्च इट So this is all the AWS console. It is easy to use. So we are created with the instance. Let's see. What do we have here? Okay, there is the instance. This is the instance ID. It is pending now. It will show something in some time. Okay, this is the public address. So we can access our instance with this address. Okay, let's refresh it out. This is showing running. We can see the details by clicking here. So these are the details. Instance name, DNS ID, so our type that is Amazon Linux and all the information. We can customize it as we can. Let's do for networking this. So we have a private DNS and a public DNS. Public DNS से हम कोई भी access कर सकता है इसको. Just we have to open the address and private से
वो सिर्फ इसी जो कंसोल जिसने बनाया है वही एक्सेस कर सकता है उसको और उसमें मॉडिफाई कर सकता है। हमारे पास इंस्टेंस टाइप भी होते हैं, लाइक पॉट इंस्टेंस, रिजर्व्ड इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट। तो दिस ये सब कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कितना बजट है। जैसे कि अगर हम किसी भी रिजर्व्ड इंस्टेंस को यूज़ करेंगे तो रिजर्व का मतलब हम उसे पहले से कुछ टाइम के लिए रिजर्व कर देंगे, तो वो हमारी कॉस्ट सेविंग में हेल्प करता है। उसके बाद हो गया स्पॉट इंस्टेंस मतलब हमें एट द टाइम ही इंस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर तत्काल में कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द instances. We have various other services too, like network and security, load balancing, auto scaling, so many facilities. So this is about the EC2 instances. So let's move forward with the PPT. This is the basic idea of EC2 instance, how it creates, how it runs, how it look like when you will start your own hands-on. I will tell you how to create the account. Wait, can you please share the PPT again, Nikita? Okay. Thank you so much. So it is quiz time. Let's see. Please next. So the first question is, what is the availability zone in AWS? An availability zone is a geographical area or collection of data centers. An availability zone is an isolated logical data center in a region. The option C is an availability zone is the endpoint for AWS. Please write your answer in the chat box. Don't Google it, please. Okay. A, B, 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 B. Vivek, you can mute yourself. Or please don't share the screen. B, B. Vivek, don't share your screen. Okay, thank you. B, B. So let's see the answer. Okay, the answer is correct. Most of you are right. The answer is an availability zone is an isolated logical data center in a region. So let's see the options first. Why B, why not A and C? So the first one saying collection of data center. No, availability is not the collection of data center. It is a particular data center, like a data center in India, a data center in America, a data center in London. So this is the availability zone. Let's see the option C. It is the endpoint. No, endpoint is another service of AWS called GeoPoint, which is a different thing. So AWS availability zone is not that. Option C looks more appropriate. That is, an availability zone is an isolated logical data center. Yes, it is an isolated logical center. So the option B is correct. Next. Second is, which of the following are the advantages of AWS? The first one is flexibility. So I don't need to. Okay. E E E E E E E E E E. Great. So you know the answer. The right answer. Let's see. What is the answer? Yes. The right answer is all of the above. As we already know. Can we see the options, please? Flexibility, as I told you, we can just open it anywhere, but we just need an internet connection. Second is cost effectiveness. As I told you, it is really cost effective and it is the future of the technology, I think, according to me. And C, scalability, as I told you, we can increase or decrease RAM as per our needs. सिक्योरिटी सिक्योरिटी जैसे हमने देखा था अभी इंस्टेंस में हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम अलाउ कर सकते थे कि कौन सा आईपी एड्रेस हमको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा काम आएगा, कौन एक्सेस कर सकता है, वो सब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो हाँ, सिक्योरिटी भी है।
Next, please. Which one is better for storing large data in AWS? First is Amazon Glacier, second is AWS. C is both. E? Bro, पहले का है. Okay. A. Okay. A. 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 C. Okay. A. A. C. Okay. Is there someone who can tell me why B is not the correct answer? Because B किसी ने नहीं बोला. You can open your mic if you wanna answer. Just to make it more interactive, I think. Is there anyone? Okay, never mind. Let's see the answer. The answer is Amazon Glacier. As I told you, Amazon Glacier में हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं एक साथ और उसे लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं और उसका रिट्रीवल भी आसान होता है. जैसे कि हमें डाटा चाहिए बहुत सारा तो रिट्रीवल भी कुछ ही टाइम में हो जाता है, कितना ही बड़ा डाटा हो. And second is EBS. EBS, I told you, it is a not that large data storage. It is a medium or small type data storage in which we can store the data according to the processing needs. The EBS जितना EBS को processing के लिए memory का इस्तेमाल करना है वो वहाँ पे कर सकता है. So next. Oh, very interesting question. Are you enjoying the webinar? Option A, yes. Option B, definitely yes. Option C, of course. So let's see the answer. All of the above. Yes. B, definitely yes. A, B, C. Ah, nice. Yes. B, definitely yes. Of course. Thank you. Thank you. I will take it as a compliment. I hope you all are enjoying the webinar. So let's move forward. So So the please main, guide the students how to crack AWS certificate. yes, this is the most prominent question which is asked to me as well as the other people. So actually this is the main topic of the webinar. क्योंकि सबको पता है AWS सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ. AWS सर्टिफिकेट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेट, जिसके अंदर अगर हम AWS सर्टिफाइड हैं तो लोग हमको सीरियसली लगते हैं. सर्टिफिकेशन इज ज़रूरी इन बीटेक. को भी एक सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है. तो AWS आसान नहीं है लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, उसको करने में मज़ा आएगा. तो इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि सपोज मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं गया था इंटरव्यू देने डिलॉयट का, तो उसके अंदर मुझसे पूछा गया था कि आपका सर्टिफिकेशन क्या है. मैंने बताया कि AWS क्लाउड सर्टिफिकेट है और उसमें मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का क्रैक कर रहा हूँ. तो वो बोले अच्छा ये तो बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, तो आपके कॉलेज से बहुत कम होने करा होगा. मैंने कहा हाँ बहुत कम ने करा है अभी तो फिलहाल. उस टाइम लगभग 10-15 ने करा था ये सर्टिफिकेट मेरे टाइम पे जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था. तो हाँ उन्होंने बहुत ध्यान दिया था सर्टिफिकेट पे. फिर इसी के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछे क्योंकि उनको एक रिक्वायरमेंट थी अपनी कंपनी में एज अ, लेकिन वो लेने कुछ और आए थे. वो कोई और प्रोफाइल लेने आए थे, लाइक C++ पाइथन लेने आए थे, लेकिन हाँ उनके पास ये जगह थी. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह रहती है आजकल हर कंपनी में. तो इसीलिए बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है और कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा इन फ्यूचर. तो इसके लेवल्स हैं कुछ. फर्स्ट इज क्लाउड प्रैक्टिशनर जो बेसिक है, फाउंडेशनल लेवल है. उसके बाद आता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवलपर. ये दो अपनी अलग अलग जोन है सर्टिफिकेट के. फर्स्ट इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में हमें दिया जाता है एक बहुत सारा कंडीशन. हमको दिया जाएगा एक 10 लाइन का पूरा क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं पूरा सिचुएशन 10 लाइन का. उसके बाद हमें सॉल्यूशन बताने क्रैक करके कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. डेवलपर के अंदर क्या होता है कि हमको सारी सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए, उनको यूज कैसे करते हैं, उनको कब कहाँ कैसे यूज करनी है with the help of some code also and all that. So this is the working of developer.
तो ये सब होता है लेवल वाइज। तो फाउंडेशनल बेसिक वो थोड़ा हल्का होता है, मतलब लो लेवल पे होता है। उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से ऊपर लेवल होता है डेवलपर का। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल करते हैं हम कोई भी एसोसिएट के लगभग 2 साल बाद, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए क्या होता है, एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है कोई भी आफ्टर बीइंग अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवलपर, कि हमको किस स्ट्रीम में जाना है। जैसे कि हम करते हैं बीटेक, बीटेक हम करते हैं नॉर्मली। उसके बाद एमटेक में जाके हमें एक कोर्स अपना प्रोफेशनली चूज करना पड़ता है। तो दिस इज द जर्नी ऑफ सर्टिफिकेशन। तो अब मैं बताता हूँ, जब मैंने सर्टिफिकेशन की स्टार्टिंग करी थी, तो जो अपना कॉलेज है उसके अंदर एक AWS का कोर्स चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने एनरोल करा था और मैंने पढ़ा था सीपीपी के बारे में। तो तब पता था हमको कि सीपीपी निकालना है हमको। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे पता चला, ये भी पता चला कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी कोई होता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने क्लियर करा था वो। तो मुझे पता था सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी होता है। तो बेसिक तो ये होता है कि सबसे पहले सीपी क्लियर करो, उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे जाओ। तो मैं थोड़ा अजीब था, मैंने सीधा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ही चूज करा था और उसी के लिए पढ़ाई करी थी। मैंने शायद 2-3 महीना करा था सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। अब लेकिन मेरे को ना उस कोर्स में बहुत फायदा हुआ। मेरे को जो कोर्स मिला था ऑनलाइन, उसने मेरे को बहुत हेल्प करी। मैं आपको भी बताता हूँ वो कोर्स कौन सा है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। मोस्टली सब ये 2 कोर्स करते हैं जो मैं अब दिखाने वाला हूँ। एक तो मुझे कॉलेज की तरफ से फ्री मिला था, तो वो वाला करा था मैंने। एक और करा था जो मेरे दोस्त थे उन्होंने। तो दिस इज दैट कोर्स। स्टीफन मारिक का कोर्स है ये। लेट मी ओके। So this is the course, Ultimate AWS Certified Solution Architect Associate SaaS C03 कोर्स। स्टीफन मारिक का कोर्स है ये। तो उसके अंदर हमको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है विद अप टू डेट। ये अप टू डेट भी करता रहता है। तो जैसे कि सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद सारी सर्विसेज के बारे में बताएगा, IAM, EC2, राउट 53, सारी सर्विसेज जो भी सर्टिफिकेशन के लिए नेसेसरी है। बहुत अच्छा पढ़ाया था इसमें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो अपने ऊपर होती है सारा कुछ। इसके बाद डेटाबेस, डेटा एनालिटिक, मशीन लर्निंग, बहुत कुछ है। तो ये सब था सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में। शायद इसका सीपीपी का भी कोर्स है एक। अरे, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का है, डेवलपर का भी है और सीपीपी का भी है। इसके पास सारे कोर्सेज हैं, तो इस तो आप देख सकते हैं। और कुछ कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे अपना कॉलेज आईडी के थ्रू। वी कैन शेयर ऑल्सो दैट आईडी इन द चैट बॉक्स इफ वी कैन प्लीज। Yes, this is the ID. Tech support @mit.ac.in. Password is MIT. Save it for further use. You can access those courses here only. All the question, I have a question. All AWS certificate are paid. Yes, they all are paid from जैसे कि जो बेसिक है वो थोड़ा सस्ता है, फिर उसके बाद एसोसिएट थोड़ा महंगा है, उसके बाद प्रोफेशनल और महंगा है। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन था, हमको 50% डिस्काउंट मिल गया था अपने कॉलेज की तरफ से। तो हाँ, कॉलेज हेल्प्स अ लॉट। तो कांटेक्ट करना कॉलेज में, या फिर कांटेक्ट करना मुझे, मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप वो कोर्स अवेलेबल हो सकता है, या फिर आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जो अपना सीपीपी था वो तो बेसिक है, उसको सिर्फ आप पढ़ के और थोड़ा ध्यान लगा के क्रैक कर सकते हैं। तो उसमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, AWS में बहुत मेहनत करनी पड़ती, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस क्रैक करके देखने पड़ेंगे, कुछ पेपर्स लगा के देखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तैयारी होगी। और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप जब एग्जाम देंगे 2 फेज में दे सकते हैं, या फिर तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू चूज। मैंने
ऑफलाइन चूज करा था क्योंकि ऐसे ही मन करा था मेरा ऑफलाइन चूज करने का, इसलिए मैंने ऑफलाइन चूज करा था। तो अब ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी जा सकते हैं। तो मेरे को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने वो क्लियर करा था। हाँ, तो मैंने अपने दोस्तों से भी सुना था, उन्होंने सीपीपी क्लियर करा था, सीपीपी का भी पता है। डेवलपर थोड़ा हार्ड होता है, डेवलपर सीपीपी से भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत लेता है क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल में आ जाता है फिर सब कुछ। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आप सिर्फ ये बताओ कि इसको ठीक कैसे करेंगे, डेवलपर में वो ठीक करना बताते हैं। So this is the basic difference between the four. So you can ask me anything if you want. Thank you, sir, for your golden words. It's an honor from you. So now it's time to take up your all queries. Please ask your queries in the chat box session. Yes, Aviral, you can open your mic. हेलो सर, हाउ Yes, आर sir. यू? I am fine. सर एक क्वेश्चन था कि हाँ जैसे मैं भी बताइए। एडब्ल्यूएस कर रहा हूँ, मैंने भी ओके, यूडेमी से 2023 का कोर्स लिया था, स्टीफन मारिक का ही अपडेटेड है वो। ठीक है। प्लस हमारे कॉलेज में ही हमें एडब्ल्यूएस एकेडमी है, उसका भी कर दिला रखा है, तो उसमें भी सीपीपी का ही है। ओके। तो जैसे उसमें सीपीपी का है, क्या वो सीपीपी का एग्जाम पेड होता है? हाँ, सीपीपी तो पेड होता है। तो जो हमें लास्ट में वो मिलेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा ना? जो ये पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स। हाँ जी। हाँ, सीपीपी का अगर हमने पूरा कोर्स करा और उसके बाद अगर हम सर्टिफिकेट के लिए ऑप्ट करें तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का भी प्लस पास्ट का। यू विल बी हाँ अ सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर वो क्लाउड प्रैक्टिशनर। ओके, और अगर इसका क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम नहीं होता ना, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम होता है जो $100 का होता है, हाँ हाँ। वो $100 का एग्जाम सोल्यूशन आर्किटेक्ट का होता है। हाँ, वो 100 वाला सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, there is one more query from Bhavna that how much time do we need to prepare to crack solution architect? तो इट डिपेंड्स। अगर यू आर अ बिगनर कि आपको कुछ भी नहीं पता क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो आपको लग सकता है अराउंड 6 मंथ आई थिंक। अगर आपको क्लाउड क्लाउड के बारे में पता है और आप सीपीपी की तैयारी कर चुके हैं और तब जाके उसे ऑप्ट कर रहे हैं एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए, तो फिर यू हैव टू जस्ट डू फॉर 3 to 4 मंथ आई थिंक। मेरे को भी इतना ही लगा था, तो आई थिंक वो बाकी डिपेंड ऑन योर मेहनत, ऑन योर टाइम, आप कितना टाइम दे पा रहे हो पूरे दिन में। जैसे कि मैं था, मेरा कॉलेज भी होता था और मेरा ये भी होता था, मुझे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी करना था क्योंकि हुआ ये था कि हमारे प्लेसमेंट आ गए थे, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, तो मेरे को 2 महीने में ही क्रैक करना था चाहे कैसे भी करूँ। तो इसीलिए मैंने दिया, रात को 2-3 घंटा इसके साथ पढ़ा। मैंने अपने दोस्तों को भी लिया, दोस्तों के साथ, दोस्त भी कर रहे थे मेरे, तो हम साथ में बैठ के अपने जो टेस्ट पेपर वो क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉल्व करते थे। तो यू कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। जितना इंटरेस्टिंग बनेगा उतना ही आपको मजा आएगा करने में और उतनी ही आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। हाउ कैन वन स्टार्ट विथ AWS? ओके, तो AWS स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको, ओके वेलकम, सबसे पहले आपको एक, मैंने बताया ना कि कोर्स में जो मैंने बताया यूडेमी वाला, उसको ही स्टार्ट कर सकते हैं। वो बेसिक से एंड तक पूरा आपको सही कर देगा। आपको बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार बस देखा और पढ़ लिया, उसके बाद उसकी तैयारी, उसके लिए हमको उसका हैंड्स ऑन भी करके देखना पड़ेगा। हैंड्स ऑन के लिए आप कॉलेज से बात कर सकते हैं, कॉलेज आपको फ्री अकाउंट दे देगा स्टूडेंट का, जिसके अंदर आपको कोई कॉस्ट नहीं होगा। एंड दिस इज द अकाउंट फ्रॉम विच ईयर वी शुड गो। इट्स ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अवर सेकेंड ईयर। ऑब्वियसली यस, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि इसका पीछे का कोर्स रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ही नया कोर्स है, इसके बारे में कोई भी प्रायर नॉलेज होनी नहीं चाहिए, किसी की भी जरूरत नहीं है। तो आप कभी से भी कर सकते हो, आप ये 12th में भी कर सकते हो ये सर्टिफिकेट। तो जितना जल्दी करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, आपके पास रिज्यूमे में डालने के लिए कुछ रहेगा, एक सर्टिफिकेशन रहेगा। ओके, एनी मोर क्वेरी? Sir, there is one more query that from Harshvardhan Sani. Is it any coupon code available for discount on solution architect exam Yes, from college side? there is a coupon code which has a 50% discount coupon.
You can see it in your college. They will allow you. और एक और तरीका होता है इस कोड को हासिल करने का। अगर किसी दोस्त ने आपका AWS का एग्जाम दिया है कोई भी, तो उसके पास एक फ्री सर्टिफिकेट वो आ जाएगा, 50% डिस्काउंट का कूपन। तो आप उससे भी ले सकते हैं। वैसे कॉलेज वालों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर हाउ मच टाइम इज वन सर्टिफिकेशन वैलिड? आई थिंक 4 to 5 years। आई एम नॉट श्योर, शायद इतना ही था, मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा था। दिखाऊं मैं अपना सर्टिफिकेट क्या? रुको, अगर कोई और क्वेरी है तो मैं बताओ, सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। Okay, 2 to 3 years. Let me show you my certificate. शायद आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले कि आपके पास भी ऐसा कुछ अच्छा आने वाला है। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरे को ये मिला था। देखो ऐसा होता है, इसके ऊपर पूरा वैलिडेशन नंबर, वैलिडेट एट, तो यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो कि यू आर अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। एक्सपायरी डेट है 3 years की, 3 year तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर सर्टिफिकेशंस। एनी मोर क्वेरी? एक्सक्यूज मी सर। यस सौरभ। सर आप थोड़ा एग्जाम पैटर्न और उसके बारे में बता सकते हैं, कैसे क्लियर करें, कैसे प्रिपेयर करें? ओके, कौन से का पूछ रहे हैं आप, सीपीपी या फिर सॉल्यूशन सी आर्किटेक्ट? हाँ, दोनों। ओके, तो सीपीपी इज बेसिकली बेसिक लेवल एग्जाम। उसके अंदर क्या होता है, जो भी आपने सर्विस पढ़ी, तो इसकी क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि आपको एक स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल करना है। तो वो S3 भी हो सकता है, ग्लेशियर भी हो सकता है, ऑरोरा भी हो सकता है, ईवीएस भी हो सकता है। डिपेंड ऑन द कंडीशन आप वो उसको सजेस्ट कर देंगे कि आप ये वाला डेटाबेस यूज करो। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स इन सीपीपी। तो सीपीपी में आपको क्या करना होगा, सीपीपी में आपको सारी सर्विसेज एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी। सारी सर्विसेज पे एक एक बार हैंड्स ऑन करना पड़ेगा कि आपको उसकी नॉलेज हो जाए उसके अंदर क्या क्या हो सकता है और वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। बेसिकली तो यूसेज पार्ट आता है सीपीपी में। वो पूछते हैं कि हमें ये चाहिए और किस चीज का इस्तेमाल करें। अब जैसे कि उनको चाहिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करें, आईएएम करें या फिर और कुछ करें। नेटवर्किंग के लिए क्या करें, नेटवर्किंग में जैसे कि 2 टाइप क्लाउड्स होते हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। तो हमको इंटरनेट पे एक्सेस चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या यूज कर सकते हैं, प्राइवेट या पब्लिक? हाँ विरल। प्राइवेट सर। इंटरनेट के लिए, इंटरनेट तो हो गया पब्लिक। क्या? इंटरनेट इज द, इंटरनेट के लिए हाँ पब्लिक भी, हाँ पब्लिक यूज कर सकते हैं हाँ। आई गेस। तो इंटरनेट के लिए मेरे ख्याल से वही आई गेस, ये वाली बात जो आई गेस वाली बात है ना, यही बात है सिर्फ। जो अब जब जिस दिन ये आई गेस वाली बात तुम्हारी क्लियर हो जाएगी कि पब्लिक करना है या प्राइवेट, उस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ ना, आप कम से कम 10 पेपर निकाल लो। 10 पेपर इन द सेंस आप 10 प्रैक्टिस पेपर पूरे कर लो और लगभग 80% से ऊपर आ जाएं वो आपके। सैंपल पेपर प्रोवाइडेड होता है? हाँ, सैंपल पेपर जो प्रोवाइडेड होते हैं वो आप कहीं से भी देख सकते हो, या तो ऑनलाइन मिल जाएंगे, कॉलेज से भी ले वो सकते हैं, कॉलेज में भी हैं। साइट पे अवेलेबल है वो, वहीं पे हाँ AWS वो भी अकेडमी है। पे। और अगर आपको और अपडेटेड चाहिए तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहते हैं। जैसे कि मैंने देखा था उस टाइम पे अपडेटेड नहीं थे मेरे टाइम पे, तो मैंने फिर ओके। ऑनलाइन सर्च करके करे थे पेपर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए। तो अब बात आती है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आपको मिलता है 2 घंटा 20 मिनट और शायद लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक कुछ ऐसे 50, ये डिपेंड करता है, 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं, किसी के भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये कुछ फिक्स नहीं होता इसका। तो आपको उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत जरूरी होता है। एक तो क्वेश्चन जो होता है ना, वो होते हैं 10-10 लाइन के, तो आपका आधा टाइम तो वो क्वेश्चन रीड करने में और ऑप्शन रीड करने में चला गया। तो आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट गेस आएगा आप वही मार पाओगे वहां पे जाके। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि पैनिक मत करना पेपर में। और जो भी फर्स्ट थॉट है वो दे देना, सेकंड थॉट हमेशा गलत होती है। तो जो भी फर्स्ट थॉट आपको लगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिक्स आंसर नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन ना तुमको सेम लगेंगे। अब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में ये पूछते हैं कि हमने 8 GB का ईबीएस लगा दिया, उसके ऊपर EC2 लगा हुआ है, उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग लगी हुई है, उसके ऊपर हमने वीपीएन कनेक्ट कर रखा है। तो बताओ हमको कि ये वीपीएन हमें स्टोरेज गेटवे से कनेक्ट करना चाहिए या फिर स्नोबॉल के थ्रू डेटा भेजें,
या फिर कैसे भेजें, विच वन इज मोर सिक्योर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका आंसर क्या है, तो उसके अंदर जो भी सुटेबल आंसर है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो इस लेवल का एग्जाम है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अपने इंस्टिंक्ट पे ही कर सकते हो बस। Sir, there is one more query from Ekta Jain. Sir, how much time do we need to prepare to crack CP? सीपी के लिए आप 2 महीने में कर सकते हो सीपी। सीपी के लिए मैंने बताया ना कि आपको सिर्फ एक तो कॉलेज से बात करो, कॉलेज से पूरा कोर्स मिल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कॉलेज वाले प्रोवाइड कराएंगे। विद शायद कॉलेज की क्लासेस भी अगर आपकी AWS की चलती हो, हमारे टाइम में चल रही थी, तो सर वो चल भी, रही है, चल रही है। हाँ तो वो भी बेनिफिट करेगी, क्योंकि अच्छा पढ़ाया था, मुझे तो अच्छा पढ़ाया था। तुम्हारा भी अच्छे ही पढ़ा रहे होंगे वैसे तो। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? पासिंग क्राइटेरिया रहता है, आई थिंक इसके अंदर तो था 70% सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी इतना ही है शायद, 70%। ओके ओके ओके। हाँ तो उससे ऊपर अगर फॉर्म लिया, वो मार्क्स लिया, तो फिर पास हो जाओगे, और 2 दिन में आपके पास मैसेज आ जाएगा विद सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। 70 है ना? 70 है। ओके सर, थैंक यू। हम्म, और किसी का कोई क्वेरी? 65 क्वेश्चन। वेलकम। I guess there are no queries left. You all are provided with the feedback form in the chat box, which is necessary to be filled. Use your registered email ID in both in order to get the certification. As I told you, this will be the most memorable event of your life. All this would have not been possible without the presence of such great audience. Thank you all for attending this event and making this event extra special. I would also like to thank you our guests for giving their valuable time to us. Reminder to all the participants present here. Feedback